Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो लर्नर्स, नमस्कार। एक और फेस टू फेस में आपका स्वागत। और मैं आज कर रहा हूँ इन्वेस्टिंग और थोड़ा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक आपने देखा मैं इन्वेस्टिंग का 1-to-1 काफ़ी इंटरव्यूज रिकॉर्ड कर रहा था, चाहे ट्रेडिंग का रिकॉर्ड कर रहा था। पर आज मुझे लगा कि चलो कुछ ऐसा करते हैं जहाँ पर 2-3 लोग हों साथ में, राइट। हम जूम पे बातचीत कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, कोई सेक्टर की बात कर रहे हैं, कोई स्टॉक की बात कर रहे हैं। इससे क्या है ना, पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होके एक कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। वेल, आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दिस। अभी अभी मैंने समाप्त किया। मुझे एक टीम मिल गई, एम्बिट की टीम, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में, जिन्होंने अभी एक पेपर रिलीज किया था और एक कंपनी के बारे में भी उन्होंने बात की है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आपके साथ में उनसे चर्चा करूंगा इस सेक्टर के बारे में और उस कंपनी के बारे में। मज़ा आएगा आपको, लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आई थिंक इससे आपको सेक्टर के बारे में तो आइडिया लगेगी, बट ये जो प्रोसेस फॉलो करते हैं ना रिसर्च करने का, इसका भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। सो आप मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो परमानेंट जुड़िए, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज बहुत कुछ हो रहा है इस चैनल के अंदर में जो आपके काम का हो सकता है। चलिए बुलाएं क्या एम्बिट की टीम को। वेलकम। Hello, welcome Team Ambit. How are you guys doing? Excellent. Amazing. Doing good, sir. This is for the first time मैं ये कर रहा हूँ कि रियल मार्केट प्रोफेशनल से मैं एक इंडस्ट्री की समझ लेके आ रहा हूँ, और मेरे जो लर्नर्स हैं उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे एंड विल टेक अ रियल एग्जांपल ऑफ एन इंडस्ट्री। सो इट्स एब्सोल्युटली प्लेजर। Ambit group, I have seen you guys for many years. I mean, the founder has been inspiration for my generation. So it's a pleasure to interact with the core team who does the research and get some useful insights from you. Thank you. Thank you. So I will start with Shushank ji. Okay. Shushant, आप सीनियर है सबसे, एंड आपने काफ़ी साल मार्केट के अंदर में समय बिताया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज हम लोग आज एक सेक्टर की बात करने वाले हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ द सेक्टर। और अभी बजट भी गया है, कल ही बजट मिला, संडे को हम सब आए थे। तो एक ओवरव्यू लेता हूं आपसे बजट को लेके पहले, एंड देन थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा कि जब आप किसी भी सेक्टर पे व्यू बनाते हैं तो ब्रॉडली क्या क्या पैरामीटर्स आप लोग देखते हैं, एंड ये इवेंट्स लाइक बजट वगैरह कितना रोल प्ले करता है उस व्यू को चेंज करने में या इम्प्रोवाइज करने में। थैंक्स विवेक, शो पे बुलाने के लिए। आई थिंक काफी सुना है आपके बारे में, एंड आई थिंक दिस इज मोर देन 300 एपिसोड्स नाउ ऑफ द शो, सो इट्स अ रियल प्लेजर विद द होल टीम टू बी हियर विद यू। एंड फर्स्ट, आई थिंक जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ योर audience, I am a chartered accountant too. I did my CA almost 25 years back, and came to Mumbai in 2001. Started my career with PricewaterhouseCoopers, worked there for about 5 odd years, and then worked briefly with Morgan Stanley in the indices arm called MSCI. And then I think because I come from a small town, have never been on campus, like the college campus was there, but it was a small campus, sort of. Never had a luxury to be in a hostel like engineering or medical students. Right. So you miss that sort of, I think, excitement in life, making new friends as well as a large group of alumni. So therefore I decided that let me do an MBA. So I did my MBA from Indian School of Business in 2007-8, and then from campus got placed with Ambit. Nice. So been with Ambit now for 18 odd years. It has been a long journey, and it had 3 parts to it. First 5 years I worked with our group CEO Ashok Wadhwa, whom you remembered as an inspiration for all our generation. I think yeah. India's top-notch professional, who I think got the respect to both CA fraternity and the professional fraternity as service providers and value adders to clients. And I think I learned a lot during my tenure working in his office for about 5 odd years.
So much so that I think gained so much trust from him that my colleague and I started a new division called Principal Investing, where we were investing from Embed's balance sheet into listed companies. Okay. Did it for about 6 odd years, and investing primarily in mid and small cap companies. Very, I would say, concentrated portfolios, not more than 4 or 5 stocks at any point of time, जी. and a large amount. But I did really well. I think both the timing was good. We started in 2013 when markets were like, I think, similar to how they are today, I think, in a sense. And did really well. In 5 6 years, we delivered almost 43% IRR Wow. and tripled our book. So it was a great sense of achievement. And then an opportunity arose, and I would say took an opportunity to lead the asset management business. It was a small peltry business, about 250 crores of assets, with about 350 odd clients. From there, we started the journey at Ambit Asset Management as a new beginning. And from there, today we are managing about close to 4,000 odd crores Nice. and a team size of almost 50 plus people across 10 offices across the country. So great journey so far over the last 18 odd years. Coming back to where I think you started on budget side as to how do we think the budget. So let's speak a few minutes on what how the budget was probably for everybody's benefit, and then the relevance of it on a yearly basis as well as an exercise. So I think this year budget, I think after last year there was a change in government's thought process as to how they are now, after I think almost 5 6 years of superb capex and spending. Somewhere I think government changed the gears, and we wrote about it. In fact, after the first budget, which was presented post the general elections in 2024, where our belief was that the government is moving away from capex to consumption. Which means that government on their part has done a lot, and now they are expecting private sector to pick up. So they are now probably getting into consumption side and create the demand, because on the supply side, I think they did a lot by spending. And February 2025 was such a budget where the government, I think, just opened up everything in terms of tax reforms, getting the I think big benefits to individual taxpayers, as well as many other measures, and also at the same time reducing the growth rates of the capex which they were doing. I think before that, for 5 straight years, every year they were increasing the allocations towards capex. This was the first budget where they sort of moderated that growth. Still a big number, but I think that was a big change. And 2020 was a full year of such, I would say, steps by government. So direct tax reforms or breaks, followed by big infusion of liquidity by RBI, then almost 125 basis points of interest rate cuts. And then I think a big bazooka of GST rate rationalization. So 2025 was quite eventful, full focused on increasing the consumption side of the economy, because I think government was seeing that especially the rural and semi-urban economy was languishing a bit for the last 3 4 years. So it needed such sort of a break at the bottom of the pyramid. I think the impact of such breaks typically takes 3 to 6 quarters. And our belief is that FY27 will be the year when a large part of those steps results will be seen in the consumption rally of this economy. This year budget, I think, again, government has sort of came back to the capex sort of thing, because I think whatever they had to do on the consumption side, they did everything in the last year itself. Right. So now focus back on spending. And I think compared to the budgetary allocations last year, the spend was actually less. Primary reason probably was lower tax collection than expected. As well as I think so government budgeted a lot in many areas, they didn't spend that much. Right. So hopefully I think they have taken moderate targets on tax collection this side. So whatever they are targeting to spend, they will be able to. One thing about this government has been quite, I would say, differentiated, is that they execute really well. Once they've decided, they executed it really well. I think last year, I think while they created budget the way they did, but I think the plan in the mind was to get the consumption side fully sorted, which I think they did really well on from all the corners.
So this year again, I think capex story has come back. I think allocations to defense, allocations to railways, roads, infrastructure, getting, I would say, a few areas of FDI, because I think one big area where India has been lacking is FDI. The last 3-4 years, I think that has been one of the missing link in the whole economy from this government side, that they have not been able to get huge FDI into play. FPIs, I would say, is beyond government's control, because they look at interest rates globally, they look at opportunities globally, and then decide where to park the short-term money. But the long-term money, especially strategics of FDI, was something which government, I think, it's not that they've not been trying, but somehow the results didn't come. So this time, I think they really went all out, especially on data centers, etc., where they've given 20 years tax breaks as well, and a safe harbor for IT industry to get more and more. I think they realized that whatever is working, let's make it happen in a bigger way. So GCCs, as you know, has done really well in the last 4-5 years. So government is, I think, now increasingly more promoting them, because they believe that they are good job creators, and there are global headwinds on the IT services side because of AI. So they are increasingly, I think, realizing that, and that was, I think, one big step. Alongside that, I think very small changes on taxation side, etc. I think they've just tried to whatever were the anomalies in the previous structures, they've tried to make sort them out. Be it the buyback tax instead of being at capital gains instead of dividend income as it was pushed a couple of years back. I think they've just sorted many of these things out. But the big bang was, I would say, 2 reads of the budget were getting back into the capex mode, and it's not just 12.2, but even, I think, if you look at the grants beyond that, is also a large number. And the second is, I would say, opening up the economy for large FDI. I think the government has shown their intentions out, and in coming this government actually doesn't wait for budgets, right? So I think they will come out with more policy announcement during the year on FDI. Right. This is just the beginning, in my view. Right. तो सुशांत, ये मार्केट पिछले 1 साल से नहीं परफॉर्म किया है, राइट? और अभी भी बजट में रिएक्शंस तो उतने पॉजिटिव नहीं थे. ऑब्वियसली एसटीटी का एक ओवरहैंग हो गया था मार्केट में, विच ऑब्वियसली विल गेट डाई डाउन. बट इंडिया हैज बीन अंडर परफॉर्मर इन लास्ट 1 ईयर, इवन दो गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनिशिएटिव्स रहे हैं, ऑल्दो कंजम्पशन साइड में ज्यादा रहे हैं, इंफ्रा में कम रहे थे. जब गवर्नमेंट इंफ्रा में ज्यादा कर रही थी, तब मार्केट वाज एक्चुअली रिजॉइसिंग मोर एंड गिविंग देम मोर थम्स अप. तो आपको नहीं लगता है कि इस बजट में प्रोबेबली एन एक्सटेंशन ऑफ कंजम्पशन बूस्ट could have added more in the beta of how market would have reacted? Because ये again infra वाले play आ गए, जिसमें अब 1 साल 2 साल लग जाएगा, infra में कुछ results दिखेंगे, and finally market will start finding attractive valuation in some sectors. See, so if you look at how government can boost consumption, there are two sides to it. Either you reduce the taxes so that people have more savings to either consume or save, right? Or the government spends money which goes into, I would say, pockets of both businessmen as well as daily earners, wage earners. Right. And eventually the consumption gets boosted. Right. I think from a tax perspective, I think beyond what has been done in 2025, then I would say that anything is less than. Right. I think government has done, I think, meaningfully well. If you look at any other country in the world, I think we are amongst the most lucrative from a income tax perspective for bottom of the pyramid. Right. I think if you, and I don't know how you define lower class or middle class, but if you define people with a lack of salary as middle class, then I think they are not paying any taxes. Right. Correct. So that's, I think, good enough and that's where I think 90%, probably 95% of the population is below that. Yeah. Correct. So when you are enough to not pay any taxes, then beyond that, whether you make it 12 lakh or 18 lakh will not make any big difference. Right. So from that perspective, I think government has done enough. Probably on the GST side, they will be doing more, but I think that's outside budget any which way always government has taken that stand. That is GST Council which decides and not the central government, because states are partners in that. State government. So I think we will see more of such things outside the budget in GST Council, more rationalization probably that will happen.
And from government side, I think they were tied up because they were aware that they will not have that much of tax collection, and that's why they allocated less and spent much lesser. So now that the spending comes back, I think it will actually boost consumption only over a 2-year period. Okay. वन ऑफ द सेक्टर्स जो कि कंजम्पशन को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करवाता है वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, और हम लोग आज सब मिल के उसी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो एक बार उस पर चर्चा चालू करता हूँ। एंड आपने बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया है उस पर, तो आई एम गोइंग टू टेक दैट रिपोर्ट एंड पीपीटी एज अ बेस फॉर डिस्कशन ऑल्सो। सो एक बार बिफोर आई गो इनटू द करंट कंडीशन ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर और कहाँ आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है, let me understand the whole automobile sector of India from you first. Yeah, no, it's a great sector, and I think for a thriving economy, growing economy, automobile is one's play on I would say, which plays across both from, I would say, right from commercial vehicles, which will help create the infrastructure, help on the logistics, etc. So all the parts of building the economy as well as the growth of the economy is where I would say the commercial vehicles will play a big part. Okay. And we have seen huge innovations happening there. Right. And from there, you move to, I would say, passenger cars, where again, how per capita income increases and people move from two-wheelers to four-wheelers. That's a big story in India. And even then, I think, so the Maruti movement, which happened in 80s, right, which I would say just changed the way India was sort of using personal logistics. Right, of giving so affordable cars to anybody and everybody. So I would say that Aam Aadmi could have afforded a four-wheeler, right? Which was not possible before, I would say, Maruti came into play. And I will talk more about it in another context after some time as to what it means for the many other sectors as well, the Maruti movement. But moving from that, I think passenger car again is a very big opportunity. And one big disappointment, I would say, from a global perspective, that many players came, tried, and then went back. Be it Americans, be it German, I would say only I think Koreans have succeeded so far, that on a mass level they have been able to create a big business opportunity, right? A part of Japanese, I think, which is the Maruti movement definitely, and then the Koreans, I think, were able to get it right. Japanese also, I think, more when they came along with the government and came out with Maruti as a joint venture, compared to if you look at either Toyota or other players, they have not been, or Honda, they have not been able to make up that mark. Somewhere they all, I think, got their strategy wrong. So again, it, I think, makes a big opportunity with now the EU FTA, which might be getting passed in few months. That sector again on the passenger vehicle side will have a big change. Because while we talked about the bottom 90 or 95%, the top 1% of the country, which is where I would say almost 50-60% of the country's wealth is there as well, right, will benefit a lot on that. And we'll be seeing what we go outside India and see those luxury cars, etc., which are very, very, I would say, expensive in India at this point of time. Any global model you take, it costs about 3 crores, 5 crores plus. I think those will be available, and we'll see a lot of it. What I think it does is that more than anything else, it inspires people. Any young kid you take, they all like to see Lamborghini and many other places, right? Now, if you see them constantly, then your desire to and get motivated to work hard and someday buy it on your own. I think, and when you see that now they are affordable, that if I earn, let's say, 1 crore or 2, then I'll be able to afford a Lamborghini in India as well in some time, who knows, right? So that becomes, I think, an inspirational play as well alongside. And then I think the biggest opportunity, which is the two-wheelers. Right, which is where I think the whole Indian population is, and it has become a big success story, and both, I would say, by global players as well as domestic players. I think I think Honda did really well alongside their joint venture with Hero first, and then on their own, and the domestic players, both TVS and Bajaj, I think they've done tremendously well. And then there are so many EV players now which are coming into play and probably will change the whole game in the next 5 years as two-wheelers become more and more EV play than the ICE play, which traditionally had been. I think that's the large opportunity. I'm not covering cycles, which I think is something of the past, probably more of a excise and
more of a luxury play going forward. But this is the whole, I would say, opportunity. And Shubham and Bhargav will share more details in terms of numbers, etc. But I am keeping myself just at the top level. So I think it's a great play for as the per capita grows from 2,500 to 5 and 7,000 in the next few years. Automobile, I think, will be a big beneficiary of this play. ओके आई कंटिन्यू विथ यू शशांकर. कुछ और Sure. मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो आई थिंक एक हाँ। बार मैं आपसे कंटिन्यू करता हूँ, फिर आई गो टू शुभम. जब भी हम कोई सेक्टर का एक व्यू बनाते हैं 10,000 फीट से, जब हम उसका व्यू बनाते हैं कि यार ये बहुत बड़ा स्टोरी है, और इंडिया में बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमको हमेशा लगता है कि हर सेक्टर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज है, एग्जीक्यूशन इज द की. तो अब ऑटोमोबाइल है. अब ऑटोमोबाइल ऐसा तो नहीं है कि ये नया सेक्टर है, ये ऑलरेडी एक मेच्योरिटी स्टेज पे आ चुका है, और अब एक नॉमिनल ग्रोथ में ये सेक्टर चलता रहेगा, राइट? और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इसका एक इन्फ्लक्स पॉइंट आ गया है, और यहां से इट कुड लीड टू अ मोर देन नॉमिनल ग्रोथ फॉर कपल ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ XYZ रीजन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ईवी है. नाउ ईवी इज समथिंग न्यू विच हैज हैपेंड, राइट? And adaptability of EV is going up significantly. The new business norms, the new world norm is, people ordering food, etc., etc. So that's a new generation which is trying to consume new things in a very different manner. So is that a, pictorial shift which will benefit this industry? Yeah, this is a very mature industry जो अपने nominal growth में चलती जाएगी. And for any investor who is looking at a very steady nominal return, this could be a good industry to watch out for. Yeah, I think at an economy level, the per capita income, we have reached 2,500 plus levels now. जी जी. Right? अभी जितना और ज्यादा इनकम बढ़ेगा लोगों का, आई थिंक उतना ज्यादा स्पेंड ऑटोमोबाइल्स पे होगा. Okay. Right? Because initially people take it to solve the problem of transport point A to point B. जी. Right? After that, the I would say luxury side of it, or having much more comfort, more functions, etc. A lot of will play out, and ultimately, what will a consumer spend money on? If you ask me, right? I think jewelry is one, home is another one, and third is automobile. Yeah. Big spend, right? Whether it's your clothes or probably shoes or food, they all are, I would say, something for which you sometimes people do take loans, I would say, but you can easily afford them without EMI, let's say. Yeah, Right? yeah. Although I would say that on phones now you take EMI as well. Yeah. Correct. But keeping that aside, I think probably phone is the fourth such category after Yeah. automobiles. Right. So these are the big spends, and as the per capita income grows and more money gets available, and as there are two earners in the family, I think the propensity to spend on big items, I think, will be much higher. So there'll be a big, I would say, shift from two-wheelers to four-wheelers, and within four-wheelers from basic to premium. Okay. Which we will witness. So the volume growth might not be, I would say, very different from in terms of growth perspective in the last 10 years and compared to the next 10 years. जी. But the value growth will be very different. Got it. And that's where I think that more than, I think, 1.5 to 2 times nominal growth might be an opportunity for automobile sector in the next 10 years. Got it. So जो भी कंपनी वैल्यू एडिशन ज्यादा कर रही हैं to so that they can command more value for their Yeah. assets. Otherwise it's a commodity play. But जो ज्यादा वैल्यू एडिशन करके वैल्यू कमांड कर पाएंगी, उनको ग्रोथ ज्यादा मिलेगा. Yeah, and there are not too many plays any which ways, right? So companies who do well will, I think, become much bigger and bigger. Yeah. And we have seen, like in two-wheelers, if you see how TVS is as compared to how they were 10 years back, Yeah. right? And the whole sector, they've made, I would say, a big value for all the shareholders compared to their competitors, right? I think similar opportunities will be there for the next 10 years, and there'll be selective winners. It's not that everybody else will, I think, create value, but there'll be one probably in each category or two probably in each category which will create disproportionate value. Got And it. it's easy because here you are not looking at evaluating 20 companies and 50 companies, right? जी. Here you have to select between 1 out of 3 or 1 out of 5 only. So there is a good chance that you can generate disproportionate returns compared to markets. Got it. I have a last question for you, and then we'll go to Shubham. This question is related to auto ancillary.
वो एक जो ऑटोमोबाइल हम लोग सोचते हैं वो है कंज्यूमर फेसिंग जो OEMs, हम yeah. खरीदते हैं, और एंसिलरी हो गया जो पीछे का पूरा बैकग्राउंड है ना। Yeah. काफी इवॉल्व हो गया वो इंडस्ट्री, राइट? Yeah. And I think they are the ones which needs a lot of innovation because the whole dynamic of automobile industry is changing, and they are also global players in true sense. They are supplying to all kind of players. तो ये जो नए नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, यूके के साथ एग्रीमेंट हुआ है, प्लस द नया कैटेगरी ऑफ कार आ रहे हैं, ईवी कार वगैरह आ रहे हैं, तो where do you see this ancillary industry evolving in India? Yeah, so this is the moment I was talking to you, referring to earlier, the Yeah. Maruti movement. That's the ancillary industry. And the context I am saying is that when Maruti started, almost all the ancillary players had a Japanese partner. जी, राइट, जो मारुति का सुजुकी का होल इकोसिस्टम था वो इंडिया में आया था, और उन्होंने जॉइंट वेंचर्स किए, कैपिटल लगाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, राइट. बट स्टिल आई वुड से दैट ऑलमोस्ट 90-95% थिंग्स वर गेटिंग इंपोर्टेड इन द इनिशियल ईयर्स. okay. Then I think volumes बढ़े, and then you got indigenous manufacturing, and now I would say that almost other than technology, everything else, probably even technology to a large extent is developed in India only for Indian automobiles. Correct. Okay. So in 30 years, that has been the big shift. And I would say the same shift will happen in many other industries, and that's what government is trying to do. I would say, let's say whether it's an iPhone, right, where probably we might say that we are building so much, but actually it's just assembling. The parts actually are imported, correct? But as the volumes grow up, I think the whole ecosystem will get developed, and this will be there for EMS, for any other electronic item, etc. I think there's a big opportunity. जैसा auto industry ने किया है ancillary में, वैसा ही I think there will be a lot of things which will happen in India in the next 10-20 years. As volumes grow up, domestic manufacturing grows up, it will happen to others. Coming back to auto ancillary industry as such, as you rightly said that we have moved away from just being domestic suppliers to global suppliers. Right? And they have to, I think, spend a lot innovating, doing R&D, etc. So that will remain a big opportunity. And with now all these FTA in place, so while we look at the headline numbers in terms of what will the duty on car imports, etc., I think the biggest beneficiary will be auto ancillary. Okay. Right, because they will get a level playing field. Right, and if you look at ultimately more the volumes, cheaper the product, and better the technology. And there are very few markets in the world which are growing. Right, so I think after India, China is already a saturated market in a way. Right, so after India, if you look at the next big opportunity, might be somewhere in Africa in next 10 or 20 years. God knows when. They have to sort their system first before they make a big one. But every other part of the world, I think, is very small in terms of growth. Correct. So more and more innovation, etc., everything will happen in India. Now more and more participation from global companies, because if you look around, most of the auto ancillary players we have seen it, we are witnessing, is that they are selling their businesses or closing their businesses, either because of environment concerns or because of or negative operating leverage, or because of cyclicality of business with their OEMs, etc. Because the growth is just not there, and increasingly manufacturers, the OEMs are importing from countries like India and China, and probably few more countries. So that I think will be a big opportunity alongside the OEMs. So OEMs, as I said, there are very few opportunities. One has to, I would say, just probably pick up a coin and toss it out. But in OEM, in the auto ancillary, there are lots and lots of companies. So I would say, even just on the listed side, probably Shubham can correct me if I'm wrong, there are at least 50 companies which are listed. And probably there will be 50 more which will get listed. So we are looking at 100 plus companies, and you will be able to find many such opportunities which will become real big. So that and Bhargav probably will cover it more in his when he covers on Denmark as an opportunity. But there are many such opportunities on the auto eng side. Correct. So if you look at from a capital perspective, on the OEM market, I would say from a consumer perspective are more mid and large cap opportunities. Yeah. While auto eng will be more micro, small and mid cap opportunities. सुपर. तो मल्टी बैगर अगर हमको ढूंढना है तो हमको शुभम और भार्गव जी से बात करना होगा. बिल्कुल. Got it. So let's go to Shubham, and Shushan, thank you so much for this brief introduction. Loved the interaction. Shubham, आप थोड़ा अपने बारे में बताइएगा, and screen sharing करके let us go through this understanding of automobile sector further from you. Sure.
So I have a much shorter introduction, but I am a chartered accountant, same as sir. I cleared in 23, and post that I started working with ICICI Prudential, and now I work at Ambit. I cover the auto and auto ancillary space, and largely I've been very lucky. So I always wanted to get into the markets. The markets always excited me. So luckily the opportunity came through for me, and here I am. Also on the sector, like he said, every kid has a dream of, owning a car and everything. Bachpan se there's this fascination. So luckily I also got a sector which involves that. So yeah, it is interesting for me. Yes. I'm Lovely. going well. Beautiful, beautiful. That's the beauty of our face-to-face podcast. How many of you would know Shubham? But we do give this platform to people to share their knowledge with everyone. Good to know you. Chaliye, Yes. let's go. Let's do a screen sharing and Sure. go deeper inside the foundation knowledge which Sushantji has laid for us. Is my Yeah. screen visible? It's visible. Yeah. Please go ahead. Oh, sure. So largely, so this is the recent newsletter that we wrote on the auto sector, and we believe that the sector as a whole is at a cusp of inflection where this is not a 1 or 2 year story; it is a multi-decadal story which we want to highlight through this. So largely, I'll give a brief background of what has happened over the last 6 to 8 months in the sector. So in August, we came out and we saw a GST cut happening across the space, across all sectors actually. But the one sector that stood out well post the cut was the auto sector. If you look at the first chart that I'm trying to show, the red worm is the Nifty Auto Index, and we can clearly see that the outperformance has been superior compared to the BSE 500 index. Yeah. And this is largely very well supported by the demand that we have seen. So we are trying to show it with the demand that we have seen, that post September, if you look at the numbers have rocketed. Nearly yesterday again, the Jan volumes came out. If you look at the volumes that have come out, all sectors, all companies have nearly delivered double-digit growth, and the top of the spectrum is in fact delivering growth north of 25-30%. So what we are seeing is this is a sustained demand that is here to stay for a while, is what we believe. And what further gives us the confidence that the demand is here to stay is we are drawing evidence from historical trends that have happened. So if you go back to early 2000, there was an excise duty cut that came in. And the excise duty cut that came in, the demand here, so the excise duty was originally reduced from 32 to 24%, and eventually it came down to 16. And if you look all of those years, we have seen extremely strong demand of double digits sustaining over the next couple of years. So we are at least speaking on a smaller time horizon, we are at least positive for the next couple of years that this demand here is to stay. Okay. Shubham, more of a theoretical question that the cost, how much is the cost been reduced for owning a car in percentage terms, approximately? Sure. Sir, when we talk in percentage terms, it's around 7 to 10%. But the real juice lies in the absolute value reduction that we have seen. So let's say you're talking about a 10 lakh car. The price has come down by ₹1,00,000. That is a very big saving in the hands of a consumer. Okay. So that is why we have seen such strong traction coming in this space, because the absolute savings in the hand of the consumer are very high. Okay, got your point. Yeah. And maybe a lower interest rate environment also is kind of adding it to the overall. Right. A lower interest rate will further support this cycle to grow. So it's a multiplier impact then. And the government has consciously used this as a tool, because at that time when the overall interest rate scenario is low in India, and this was, if that is needed, then obviously the government did it. So that's great. Right. Yeah. Right. Correct. So as sir again drew a comparison and said that as our GDP per capita grows, your car penetration in India should actually multiply. And we in fact drew a parallel from China. Now, if you look at this data, it's a lot of numbers. I'll try to summarize it so that everyone understands it well. Yeah. So largely, China reached GDP per capita in 2007. GDP per capita of $2,500 in 2007. And that time the car penetration was 17 cars per 1,000 people. Okay. The next 3 years, their car penetration to multiply 2.5 times. So from 17 cars, they went to 43 cars per 1,000 people.
and their per capita income increased from 2000 per GDP per capita increased from 2,500 USD to 4,500 USD. Okay. Now, why is it important for us? If you compare the same scenario to India, India reached 2,500 GDP per capita in 2023. Okay. So if I had to just extrapolate it, and if you look at the numbers that in 2019, China's penetration was 153 cars per 1,000 people, which is a multiplication of 9x over the next 12 years from 2007. So this really paints a very positive picture on how the Indian industry and where is it headed in terms of the penetration increasing. Okay. I think China is a fair comparison. I mean, just being the devil advocate. But China is huge and people need car to travel from one place to other place. India doesn't have necessary infrastructure in place that we can do that comparison. Sir, it's in fact actually a chicken and egg situation. So the infra will come, the demand will come. The demand will come, the infra will come. It's actually both the things have to flow together to, finally get the end result of a good demand with a good infra. So I think it's a fair assumption to make that India is headed at least we get an idea on where the direction is of the demand. Okay. That's fair enough. That's fair. Yeah. And also this is a example we drew from China. If I had to take an example from India itself, now the third chart that I have shown on the slide is actually a 8th pay commission, which is expected to happen sometime in FY27. Okay. Now, what is this? So this is basically, to give a background, this is basically a one-time payout that happens to all central government employees. Now, why is this so relevant? If you look at the historical data, last 2 times when this happened, so the rectangular boxes is what I'm trying to highlight. The last 2, so in the 6th pay commission, it was announced sometime in FY07. Payout happens in parts. So payouts went on till F59. And post that, if you look at the demand, F5, 10 and 11, the demand has surged massively. Again, that is the same thing that has happened in 7th pay commission. So now again, the 8th pay commission coming out, GST cuts happening, interest rates soft. We are again quite bullish, and this trend really gives us confidence that the demand will be quite strong. Okay. What is this FY20 में negative क्या है? ये because of the COVID, right? Yeah, sir. This is because of COVID. तो 7th पे कमीशन का जो भी अभी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका बेनिफिट 2026-27 मतलब काफी टाइम बाद दिखा रहे हैं आप इसमें. So largely कैसा होता है, they announce it and then the payout happens in 6 months to a year's time. Okay. So once the money flows in the hands of the consumers, then they eventually start buying. So you have to look at it for a 2-3 year view to get a sense of how the demand reflected. Okay. So ideally demand should have got reflected in 22-23, no? With that logic. No, sir. So you're right. So your 7th pay commission took place in FY16 and your demand reflected in FY17 and 18. हाँ. तो it's basically अभी 8 पे 27 में होगा सर. 27 में होगा, उसका डिमांड आएगा उसके अंदर. Okay, fair enough. Got it. Right. So this is again one more factor that we wanted to highlight. And largely, what else is happening? What other changes are we seeing that will or is pushing this? So as you highlighted, is the infra spend there? Is the infrastructure there for it to grow? So we took a few examples out to show that infra is developing and India is on the right path to both in terms of national highways and also in terms of metro cities. We are seeing that both the places the government is spending and is trying to reduce the travel times. If I had to take the example of Bombay itself, now they made the coastal roads, right? I can travel a distance of 14 kilometers in 18 minutes. That used to take 30, 35, 40 minutes before during the evening. Now that is a very big development that they have done there. The same, we have drawn an example of this Mumbai to Nagpur journey. So this journey earlier used to take around 18 to 20 hours, which now with this Samruddhi Mahamarg that they have launched, it has come down to 10 hours. So basically what we are trying to say is that the infra is there. And as the infra grows, your demand for high speed cars, your average speed of travel will eventually grow. And this will support your demand. Also, it's not just roads that are being developed. It is the technology that they're integrating. So now they bought it. Some years back, they introduced FASTag. FASTag is again aiding this.
stop times at toll booths are reducing. And now if you look, they're trying to do barrier-free tolling system. So now basically you don't have to stop anywhere. And this is technology which is globally widely used. If you go to Europe, if you go to Singapore, widely used, where you don't have to stop anywhere, you cover the kilometers. Automatically, there is a RFID which scans your distance you have covered, and automatically your money is reduced, basis on whatever distance you have done. So I believe that again, the infra is on the top of their head and it is being developed in the right direction, which will support it. Okay, fair point. ये बिलीव तो 5 साल पहले भी वैलिड थी, क्योंकि इंफ्रा तो हमारा डेवलप हो ही रहा था, आज भी वैलिड है, 5 साल बाद भी वैलिड है. फिर भी ये ऑटोमोबाइल सेक्टर चलने में इतना टाइम क्यों लगा? Sir, auto sector has done well over the years. If you go back and look at 2020 numbers versus today, your PV industry has grown well. You have seen a transition happening. It is not only volume growth that you have to look at. You have to look at how the industry has grown. Right. So if you see, just to highlight, FY19, small SUVs as a percentage of the industry was 30% of the industry. Okay. Today that number is 65% of the industry. Okay. Out of 100 cars, 65 sold are getting SUVs. Now your realization in that case grows multifold, right? So the demand is strong, and we are seeing that in the numbers that are coming out now also. So not just volume growth, but realization growth, revenue growth, all of that has been very well. Fair point. I got your point. Yeah. Sushant also mentioned this, and it's a fair point. Yeah. ठीक है. So and one more thing again that we really should draw parallels to. So again, the EU-India FTA came in, right? Now, what does this really push? This benefits the luxury car segment. Now, how does it help? Your duties on a CKD, on a CBU, completely built up unit, come down from 110% to 35%. Yeah. Right? Now, if I had to take the example of Range Rover, now Range Rover did the same thing. Earlier, they used to, a lot of the models they were importing as CBUs. Now in 2024, they started doing manufacturing in India and assembling their units. How did it really help? We can see the impact visible in numbers. So if you look at Range Rover, they started in 2024. In 2025, their sales grew by 50%. And the cost reduction on this is massive. So earlier, if I had to take the cheapest model, it was 1.7 CR, which came down to a 1.4 CR. That is a price reduction of 15% and a saving of 30 lakhs in the end consumer's hand, which is a very big number, right? So again, the focus of the manufacturers, I believe, is to localize. Now, when this EU-India FTA came in, to highlight, Mercedes CEO came out and gave a statement that 90% of their cars are locally manufactured in India. BMW, you look at the numbers, 90% of the cars are locally manufactured in India, right? So this is a very big push to the Indian auto and industry as well, right? Once your OEM ecosystem is expanding, there are more OEMs coming in India. They will start sourcing from India, and then they can eventually make India as an export hub as well. So the opportunity here is very big. If you look at Hyundai is trying to create India as an export hub globally. Maruti is trying to do the same. So they are trying to create India as a base for exporting globally. So again, we are seeing good response to localization in India as well. And also one more shift over the last 5-6 years that we have seen in the industry that we want to highlight is consumer mindset. पहले लोग शोरूम में घुस के मारुति के शोरूम में कितना माइलेज आएगा? The question was mileage. What is the mileage? कोई फीचर से फर्क नहीं पड़ता, कोई एयरबैग से फर्क नहीं पड़ता. Today the question is what all features are here? Features क्या है? Right? So everyone wants a sunroof in their car. Everyone wants 6 airbags. Everyone wants the top of the head, top of the level display. Everyone wants a LED speedometer, right? Even if you look in two-wheelers, the penetration of as simple as a display, LED display is growing massively. And there is a lot of benefit that is flowing through, right? Your realization is growing very fast. So again, we have taken two parallels. If you look at the sunroof penetration in India, FY17, it was 4%. FY27, it is expected to be 40%. That is how sunroofs penetration in India has grown. And to not specifically focusing on any OEM, but just to take an example, today an Hyundai i20, which is a 10 lakh rupee car, it comes with a sunroof, it comes with an level 2 ADAS.
That is the kind of features that are being offered at a 10 lakh rupee price point, because all of these features are being localized. Otherwise, the cost would never have been affordable. Today, there are a lot of players doing sunroof manufacturing in India, which is helping them to do it at such a price, supply it at such a price. Yeah. Again, we have drawn parallels from ADAS. Although ADAS penetration looks to be at a single digit level, if we look at 2021, it was 0.3%, which has grown to 5.6, 5.8%, right? So that is again a multifold growth that we are seeing. And now all the models, all the OEMs that are coming out with, most of them are coming out with all the top of the end features you can think of. It is not really that you have to go to a 60, 80 lakh rupee car to get all the features access. You're getting that in a 25, 20 lakh rupee car as well. Fair point. Point well taken. शशांक भाई, आई जस्ट वांट वन इनपुट फ्रॉम यू ऑन दिस कि जैसे थेमेटिकली हमने एक व्यू बना लिया कि यार ये सेक्टर या ये थीम अच्छा है, वर्क करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अब जब हम इसके अंदर में जब स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करने जाते हैं तो इस फ्रेमवर्क में स्टॉक को कैसे फिट करते हैं? Yeah, so I think so first thing, as you rightly said, key sector identify करना है. So you have to take a top-down approach, that in terms of where do you see the big macro trends, where you can make money for the next 10 years, right? जी. I'm not talking about traders here, I'm talking about long-term investors. जी. तो वहाँ पे क्या 10 साल में क्या हो सकता है और कहाँ पे बड़ा पैसा बन सकता है. So you can see getting into a micro cap company or a small cap company is easy. You can find so many niche opportunities, correct? But if you are not that risk taker, because out of 10 companies you invest in, you will make money in 1 or 2 companies big time, correct? But you lose money, and if you pick the wrong one, then you don't make that much money. So if you are looking at matured opportunities, then you will have to look at ki 10 years mein kahan hai. So auto is one such sector, correct? Now, when you're looking at companies in that, I think the biggest thing which I look at is ROCE. Okay. Right. So that says everything about, I would say, the opportunity, the management quality, and the business discipline. Okay. Because see, future क्या होगा किसी ने नहीं देखा है. We can all make stories, we can imagine things, but ultimately the proof of the pudding is in eating. So if somebody has delivered ROCs in the past 10 years, right, which is good, and where they're able to reinvest that money into the company, which means that there are opportunities there in their sector. Correct. So high ROC with reinvestment opportunity is the, I would say, easiest way to identify good businesses with low risk profile. Okay. Right. Okay. You can look at low ROC business in the past कि इनका high ROC बनेगा, but ultimately जिसने past में किया हुआ, I think they have a much better chance and probability to get success in the future. Got it. I think it's a good filter to start with. बाकी उसके बाद हर कंपनी का जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है या जो इनोवेशन वो लोग कर रहे हैं उसमें तो जाना ही पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मे बी अ कंपनी विच हैज लो ROCE suddenly has potential to generate high because of certain changes which has happened. Yeah. See, EBITDA मार्जिन वगैरह, मतलब कोई भी आप मार्जिन वगैरह देखते हो, so that ROC क्या है, पूरा स्टोरी को एक साथ कर लेता है. Correct. Because some people might have a strategy of high margin but low turnover, some people might have a high turnover and low margin, right? Ultimately आपने पैसा कितना है बनाया, that is more important. EPS growth, correct? That's the most important part. बरोबर. Right? So if you are allocating capital efficiently and you are growing your EPS, then that's the best combination. So these are the two things one has to look at: EPS growth and ROC. Right. हमारा एक स्टैंडर्ड डेटा पॉइंट ROC जो कि बहुत सारे टूल्स में है, इंक्लूडिंग स्टॉकेज में भी हम लोग दिखाते हैं, बट क्या आप लोग एज एम्बिट हाउस, आप लोग का कोई और तरीका ROC कैलकुलेट करने का, कोई यूनिक तरीका आपने बना रखा है? Probably Bhargav will tell more about it when how he looks at ROCs in the small companies. See, large companies, it's very mature business, it's very easy to, right? But how do you apply the ROC number in, I would say, micro cap companies? I think something Bhargav will talk about, and I think that's where I think the audience will benefit a lot. ठीक है. तो शुभम, आपसे कंटिन्यू करते हैं. ये सेक्टर वाली बात, अभी जो ये स्लाइड देख के समझ में आ गया है कि वैल्यू एडिशन ही ग्रोथ और वैल्यू का ग्रोथ का रीजन है, ये सेक्टर ग्रो करेगा, राइट? नेक्स्ट स्लाइड. ओह ग्रेट. तो लेट्स पार्क शुभम फॉर द टाइम बीन एंड लेट्स गेट इनटू स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, बिकॉज आई थिंक अपने टॉप डाउन जो जा रहे हैं बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है. तो एक बार भार्गव के पास चलते हैं, बिकॉज ये एक अपॉर्चुनिटी है जो भार्गव डिस्कस करना चाह रहे हैं. बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा डिस्क्लेमर दे देते हैं कि दिस इज जस्ट
डिस्कशन ऑफ अ स्टॉक. ओके, कोई भी इसको ये ना समझे कि हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं या कुछ देर. ऑल्दो वी आर वेरी वेल सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज, एम्बिट एज वेल एज स्टॉकिस्ट, बट स्टिल वी वांट टू बी श्योर कि इसको आप एजुकेशन के लिए ही यूज कीजिएगा. डू नॉट जस्ट गो एंड बाय द स्टॉक just because Ambit is saying or Bhargav is saying or I've asked them to be in this program. All right? चलिए भार्गव जी, मैं आपके साथ ना इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि एक स्टॉक में आप कैसे सोचते हैं और व्यू आपने कैसे बनाया है फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. थैंक यू विवेक जी हमें इनवाइट करने के लिए. जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. सो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्लोज टू अबाउट 20 years of experience, and I come from a conservative city, Surendranagar, which is in Gujarat. तो जब छोटा था तब सबको लगता था स्टॉक मार्केट तो कभी भी बच्चे को भेजना नहीं चाहिए, काफी सट्टा होता है. बट आई थिंक पिछले 20 साल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा और बेसिकली समझ में आ गया है कि ये खाली सट्टा नहीं है, काफी साइंटिफिकली भी आप पैसा बना सकते हो. सो 13 साल रिसर्च में स्पेंड किया था अक्रॉस वेरियस बुटीक सेल साइड आउटफिट्स लाइक एडलवाइस, BNK, एम्बिट. 10-11 साल स्पेंड किया था. काफी 22-23 कंट्री घूमा, काफी फॉरेन फंड मैनेजर्स से मिला, समझा कि कैसे रिसर्च करते हैं और उस तरीके से स्मॉल कैप में एम्बिट टॉप 10 में आ गया. सो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमको काफी एक्सपोजर दिया. एंड देन went to Kotak Mutual Fund for 5 years and came back to Ambit. क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला फॉर लुकिंग एट माइक्रो कैप्स. तो माइक्रो कैप्स इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है अभी भी. लोगों को लगता है इसमें काफी रिस्क है क्योंकि वोलेटिलिटी है. बट मुझे लगता है कि पर्सनली अगर किसी को एसेट एलोकेशन करना है तो करीबन 10 से 15% माइक्रो कैप की तरफ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में गवर्नेंस काफी इम्प्रूव हो रहा है इन माइक्रो कैप कंपनीज. पहले ऐसा था कि माइक्रो कैप कंपनीज के इंफॉर्मेशन इतने ट्रांसपेरेंट नहीं थे, बट पिछले 4-5 सालों में काफी अच्छे ऑडिटर्स आ गए हैं, काफी अच्छे डिस्क्लोजर्स आ गए एनुअल रिपोर्ट में, और उस वजह से ये सेक्टर काफी इन्वेस्टेबल हो गया है. Okay. और इसमें काफी वैल्यूएशन आपको आर्बिट्राज मिलता है कंपेयर टू मिड कैप एंड लार्ज कैप, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते. बट जैसे जैसे कंपनियां अच्छा बैलेंस शीट दिखाती है, अच्छे कैश फ्लोज दिखाती है, इसमें अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आएंगे और उससे आपका काफी वैल्यूएशन आर्बिट्राज क्लोज भी हो जाएगा. सो कमिंग टू लैंडमार्क, हमने क्यों सिलेक्ट किया. जैसे कि हमने एक थॉट ऑलरेडी प्रेजेंट किया है कि ऑटो में काफी प्रीमियमाइजेशन आएगा. और अगर आप कोई भी सड़क पे जो भी चल रहा है उसको अगर आप पूछो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, तो सबसे पहले जनरली सबके मन में मर्सिडीज की बात है. एकदम सही कि वो भी काली वाली मर्सिडीज ही लेनी है, एकदम चमचमाती है, तो सबको मजा आता है, मतलब मर्सिडीज में घूमते हुए देखने को. तो लोगों को लगता है कि लोग गाड़ी देख रहे हैं, बट लोग अपने आप को उस गाड़ी में देखते हैं. उस वजह से उस गाड़ी की तरफ लोगों की नजरें जाती है. तो हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में जैसे जैसे आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, वैसे जैसे अभी आज SUVs ज्यादा बिक रही है, बट गोइंग फॉरवर्ड आपकी लग्जरी कार्स भी काफी बिकने लगेगी. पहले इंडिया में ये भी था कि अगर सेठ जी मर्सिडीज चलाएंगे तो जो सैलरीड वाले हैं वो मर्सिडीज नहीं चला सकते, क्योंकि उनका प्रमोशन अटक जाएगा. बट अभी इंडिया काफी तेजी से वो नोशन भी निकाल रहा है. नो लॉन्गर ऐसा है कि एम्प्लॉय अगर मर्सिडीज ओन करता है तो उनके प्रमोशंस भी होते हैं. सेठ जी बड़ी मर्सिडीज चलाएंगे, एम्प्लॉय छोटी मर्सिडीज चलाएगा. उस तरीके से बेसिकली वो जो परसेप्शन भी है वो हट गया है. स्टार्टअप कल्चर काफी आ गया है, स्टार्टअप्स में काफी एंटरप्रेन्योर्स ने पैसे बनाए. हमें ऐसा लगता है कि मर्सिडीज का जो पेनिट्रेशन है, जो अभी 18-20 हजार गाड़ियां बिकती है पूरे साल में,
वहां पे बहुत स्कोप है मतलब गाड़ी ओनरशिप करने का। सो लैंडमार्क ऐसा एक कंपनी है जो बेसिकली मर्सिडीज तो इंडिया में लिस्टेड है नहीं, तो अगर आपको मर्सिडीज पे बेसिकली पैसा बनाना है, जी। सो किस तरीके से बनाओगे? सो लैंडमार्क इज द ओनली कंपनी जिससे आप मर्सिडीज के ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जी। सो अगर 100 मर्सिडीज इंडिया में बिकती है तो लैंडमार्क 17 मर्सिडीज बेचता है। सो ओके। लैंडमार्क हैज ऑलमोस्ट 17% मार्केट शेयर एंड बाय फार he is the largest in terms of market share of selling Mercedes in India. लैंडमार्क एक कार रिटेलर है, मतलब अगर आपको शोरूम में जाना है गाड़ी लेने के लिए तो लैंडमार्क इज द मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर। उसके अलावा वो लोग BYD, जो हम आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जो समझाया था, सो BYD इज नाउ ओवरटेकन टेस्ला एज वेल ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ EV सेल्स। और इंडिया में भी काफी तेजी से BYD का एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में BYD लेना है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट आपको लैंडमार्क के पास ही जाना पड़ेगा फॉर बाइंग BYD। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ हाईलाइट इज के लैंडमार्क इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स फार एज प्रीमियमाइजेशन इज कंसर्न। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लैंडमार्क के बारे में है वो ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि आपको वेटिंग लगती थी गाड़ी लेने के लिए, मतलब 4 महीना वेटिंग, 5 महीना वेटिंग, 6 महीना वेटिंग। अभी कोई वेटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस आ गए। पहले तो क्या था कि केवल मारुति था, फिएट था, एम्बेसडर था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज तो क्या है कि अगर आपको मारुति में वेटिंग है तो आप ह्युंडई के पास चले जाओ, वहां वेटिंग है तो किया के पास चले जाओ, वहां वेटिंग है तो महिंद्रा के पास चले जाओ। हाँ। सो पहले काफी जो कार रिटेलर्स थे उनका धंधा काफी थ्राइव करता था क्योंकि वेटिंग पीरियड काफी था गाड़ियों में। तो बेसिकली लोगों की लाइन लगती थी शोरूम के बाहर गाड़ियां लेने के लिए। अभी रिवर्स हो गया है, अभी ऐसा नहीं रहा कि कोई वेटिंग पीरियड है। इसलिए आपको अगर एज अ रिटेलर सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक एक्सपीरियंस देना पड़ेगा कस्टमर को, जिससे कि आप कस्टमर का दिल जीत सको और कस्टमर आपके पास बेसिकली गाड़ी लेने आए। सो बिजनेस हैज क्लियरली शिफ्टेड from being a sort of a seller's market to being a buyer's market. Now the customer is the king. So therefore you have to provide a unique experience. So Landmark क्यों हमें अच्छा लगता है? एक तो ये लौता कंपनी है जो पूरे इंडिया में है। अगर आप कोई भी कार रिटेलर्स देखोगे सो दे आर वेरी रीजनल, जैसे कोई गुजरात में होगा, कोई पंजाब में होगा, कोई वेस्ट बंगाल में होगा, बट लैंडमार्क एक लौता कंपनी है जो पैन इंडिया प्लेयर है। सो करीबन अगर आप उनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी देखें तो करीबन 5,000 लोग लैंडमार्क में काम करते हैं। वैसे कोई आप रीजनल डीलर देखोगे तो उसमें 100-150 लोग भी काम नहीं करते। सही बात है। अब इसका फायदा क्या है? पैन इंडिया होने के काफी फायदे हैं। एक तो आपका बार्गेनिंग पावर काफी स्ट्रांग हो जाता है विद द OEM। मतलब अगर आज मैं पूरे इंडिया में हूं तो मैं सबसे ज्यादा गाड़ियां बेचता हूं तो मुझे सबसे बेस्ट स्कीम्स और डिस्काउंट्स मिलेंगे जो मैं पास ऑन कर पाऊं। दूसरा कि इंडिया में जनरली पैसा गाड़ी बेचने से नहीं बनता, गाड़ी बेचने में तो 3-4% मार्जिन ही होता है। जनरली पैसा बनता है आपका सर्विस सेंटर्स में। और जनरली क्या होता है कि अगर आप महंगा गाड़ी लोगे तो आप सड़क के रोड साइड सर्विस सेंटर में कभी भी नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब भी आप महंगी वाली गाड़ी लेते हो तो आप एक 5 साल का वारंटी या तो 3 साल का वारंटी भी साइन अप कर लेते हो इन टर्म्स ऑफ अ पैकेज। और उसमें ये होता है कि अगर आपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर के अलावा कहीं भी गाड़ी सर्विस कराई तो वो वेव हो जाता है, आपका वारंटी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए टिपिकली ये कार डीलरशिप का फायदा ये है कि अगर आपके दुकान से किसी कस्टमर ने गाड़ी ली है तो वो आपका अगले 5 साल तक कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि वो आपके सर्विस सेंटर पे आएगा और वहां से आप बेसिकली अच्छा पैसा कमा सकते हो। करीबन 18 से 21% का EBITDA मार्जिन होता है in terms of servicing, and that is where return on capital employed is made. जो
तो जो सुशांत जी बता रहे थे कि बेसिकली अच्छी आरओसी कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अगर हम लैंडमार्क के बारे में बात करें तो लैंडमार्क का सर्विस सेंटर में करीबन 25% के ऊपर आरओसी बनता है। सो जब वो गाड़ी बेचते हैं तभी ऑब्वियसली आरओसी डिप्रेस्ड रहता है, तो इसलिए हमने ये कंपनी इस समय पे ली है क्योंकि अभी उनके आरओसी थोड़े डिप्रेस्ड है। सो बेसिकली क्योंकि वो लोग ने अभी काफी नई गाड़ियां बेची है, अब जैसे जैसे वो गाड़ियां रास्ते पे आएगी चलेगी उनका सर्विसिंग होगा तो ऑब्वियसली आपका अगले साल इसका आरओसी काफी तेजी से बढ़ सकता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो शुभम मर्सिडीज खरीद सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सुशांत सर घूमेंगे तो शुभम को नहीं खरीद सकता है। इसका बहुत इच्छा है। So why we like landmark cars? Moving on, next slide. Yeah. So अगर हम इंडस्ट्री के बारे में देखें, सो इंडस्ट्री में बहुत सारे कार रिटेलर्स आप देखोगे, वेराज ग्लोबली अगर आप देखने जाओ तो ये काफी कंसोलिडेटेड इंडस्ट्री है। मतलब जो टॉप बेसिकली कार रिटेलर होता है जी, उनमें उनका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लैंडमार्क की बात करें तो लैंडमार्क का मार्केट शेयर लेस देन 1% है इंडिया में। सो इसमें काफी स्कोप है इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन। और क्यों कंसोलिडेशन होगा, अब कंसोलिडेशन होने के कई रीजन है, बट अगर हम टॉप 2 रीजन की बात करें वो ये है कि अगर मैं एक ही लोगों में हूं, जैसे कि इंडिया में क्या हो रहा है कि काफी कार रिटेलर्स केवल महिंद्रा का ही गाड़ी बेचते हैं, या तो टाटा का बेचते हैं, या तो मारुति का बेचते हैं, या तो ह्युंडई का बेचते हैं। तो क्या होता है कि अगर वो ब्रांड का कोई पर्टिकुलर मॉडल सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा कि वो कार रिटेलर पे बहुत प्रेशर आ जाता है। जैसे कि महिंद्रा का कोई 2-3 मॉडल चला नहीं तो अगले 2-3 साल महिंद्रा मार्केट शेयर जनरली लूज करता है। तो उस वजह से कार रिटेलर जो केवल महिंद्रा में काम करता है उसका काफी नुकसान होता है। सो जनरली इंडिया में ऐसे कार रिटेलर्स बहुत है जो सिंगल ब्रांडेड गाड़ियां बेचते हैं। अभी वहां पे क्या हो रहा है कि वहां पे साइकिल्स इतने लॉन्ग हो रहे हैं कि अभी जैसे शुभम ने समझाया कि टेक्नोलॉजी गाड़ियों में काफी तेजी से बढ़ोतरी ले रही है। जैसे आज से 2-3 साल पहले सनरूफ नहीं था, आज से 1-1.5 साल पहले अडास नहीं था। तो अगर आपके कोई ब्रांड ने उस अडास लाने में देरी कर दी तो देन दैट ब्रांड कैन सी अ बिग मार्केट शेयर लॉस। तो ऐसे जो सिंगल रिटेलर्स है वो आगे चल के बिजनेस करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो लैंडमार्क ऐसे रिटेलर्स को आइडेंटिफाई करता रहता है जिनकी हालत थोड़ी खराब रहती है और उनको खरीदता रहता है, क्योंकि बेसिकली सिंगल रिटेलर होना बहुत मुश्किल है। तो लैंडमार्क के लिए फायदा क्या है कि एग्जिस्टिंग बेस मिल गया मुझे और वो लोग को एक और नई ब्रांड में जाने का मौका मिल गया। सो इट्स अ वेरी कंसोलिडेटिंग काइंड ऑफ अ सेक्टर, इसलिए हमको अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी। दूसरा कि सेकेंड जनरेशन को ये बिजनेस में काफी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिंगल ब्रांड वाले रिटेलर्स के मार्जिन्स काफी सिक्लिकल हो गए। सो काफी जो लोग फंसे हुए हैं उनको कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं है आगे चल के। सो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट बेसिकली वो किसी और को बेच दे। सो टू दैट एक्सटेंट इंडिया में काफी स्कोप है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री कंसोलिडेशन। और अगर हम ग्लोबली भी बात करें तो जो टॉप 10 बेसिकली डीलर्स है अक्रॉस कंट्रीज लाइक थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, करीबन 10 to 20% इज द मार्केट शेयर बाय द टॉप 10 डीलर्स। और इंडिया में अगर हम टॉप 10 डीलर्स की बात करें तो 4-5% ही मार्केट शेयर है। सो कंसोलिडेशन का काफी स्कोप है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर भार्गव जी, टोटल कितने डीलर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया, सब मिला मिलू के? सो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये काफी अनऑर्गेनाइज्ड सेटअप है। जैसे ऑटो में क्या है कि हमें ब्रांड वाइज नंबर्स मिलते हैं कि मारुति की कितनी गाड़ियां बिकती है, अशोक लेलैंड की कितनी ट्रक बिकती है, टीवीएस की कितनी डीलर्स बिकती है, बट ये सेगमेंट में कोई भी डेटा पॉइंट नहीं है। मतलब अगर हम
बॉम्बे बॉम्बे की अगर बात करें तो मुझे लगता है करीबन 50 से ज्यादा रिटेलर्स होंगे. मतलब टिपिकली अक्रॉस सीवीज, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स. सो टू दैट एक्सटेंट ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितने होंगे, बट मुझे लगता है कि अगर बॉम्बे में ही 50 हो तो पूरे इंडिया में तो काफी बड़े नंबर में. गॉट इट. इंटरेस्टिंग. या मूविंग ऑन. या सो ये बेसिकली हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. सो जी. इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया में बहुत ही सालों बाद एमएनसी ब्रांड्स इंडिया में पैसा डालने लगे. मतलब जनरली क्या होता है कि जैसा सुशांत जी ने बताया कि टॉप 1% ऑफ इंडियंस के पास 30 से 40% वेल्थ है. अब वो जो कस्टमर है वो काफी शाना कस्टमर. सो वो कब फॉरेन ब्रांड खरीदेगा? वो तब खरीदेगा कि दुबई में मुझे जो पैसे में मिल रही है गाड़ी, अगर मुझे उसके आसपास इंडिया में मिलेगी तो ही मैं लूँ. मतलब इंडिया में क्या होता है कि इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी काफी ज्यादा है. मतलब आज जो इंडिया के अमीर लोग हैं वो मल्टीपल कंट्रीज में रहने लगे. जैसे 4 महीना दुबई में रहेंगे, 3-4 महीने इंडिया में रहेंगे, तो वो सोचते हैं कि मैं दुबई में टेस्ला ले लूंगा, इंडिया में क्यों लूँ, वही सेम गाड़ी का मैं डबल भाव क्यों लूँ. सो इंडिया में क्या है कि अमीर है इस वजह से आप ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि वो खर्चा भी करे. वो तभी करेगा जब उसको लगता है कि वो खर्चे का कोई मतलब है. मतलब इंडिया का जो आम आदमी है वो काफी उस तरीके से शाना है क्योंकि वो भी अपना आरोसी देखता है. जी. सो इंडिया में अभी क्या हुआ है कि बेसिकली काफी एमएनसी ब्रांड्स अभी इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे. मतलब मैं इंडिया में आके बनाऊंगा रादर देन कि मैं पूरा इम्पोर्टेड गाड़ी इंपोर्ट करूँ. उससे क्या हो रहा है कि आपका जो गाड़ी का जो बनाने का खर्चा है वो काफी कम हो रहा है. ओके. सो 100 रुपए में गाड़ी अगर बनती थी तो अब वो बेसिकली कम होके 80 to 75 रुपीज हो जाती है जब मैं इंडिया में बनाने लगूंगा. और जैसे जैसे वो स्केल अप होते जाएगा, जैसे इंडिया में करीबन 50 लाख गाड़ियां बिकती है, बट मर्सिडीज की केवल 18,000 गाड़ियां. सो जब वो 18,000 50,000 हो जाएगी तो मर्सिडीज और भी ज्यादा पैसा लगा देगी और आपकी मर्सिडीज का जो ओनरशिप का जो कॉस्ट है वो कम होते जाएगा. उससे क्या होगा कि बेसिकली आप उसको दुबई में खरीदो या इंडिया में खरीदो, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा इन टर्म्स ऑफ परचेज. प्लस ये जो एफटीए साइन हुए, सो रिमेंबर मर्सिडीज इज अ यूरोपियन ब्रांड, तो वो एफटीए में ड्यूटी भी काफी कम कर रही है लोग. सो आपका बेसिकली अगले 6-8 महीने में जैसे ही एफटीए रोल आउट होगा तो आपका ड्यूटी भी काफी कम हो जाएगा और उससे और सस्ता गाड़ी हो सकता है. बट अदर देन दैट ये जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप कर रहे हैं उससे हमें लगता है कि काफी बेसिकली पैसा आप बचा सकते हो. अगर आप Hyundai की बात करो तो 33,000 करोड़ रुपया लगा दिया है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में. एक वियतनाम का प्लेयर है VinFast, इतनी गाड़ियां भी नहीं बिकती, 18,000 करोड़ लगा दिया है इंडिया में. मर्सिडीज की आप बात करो तो करीबन 3,000 करोड़ ऑलरेडी लगा चुके हैं इंडिया में. सो द आइडिया इज के इंडिया में लग्जरी कार का जो पेनिट्रेशन अभी काफी कम है, तो हमें लगता है कि जैसे जैसे वो गाड़ी सस्ता होगा, अगर आप देखो सलमान खान का पिक्चर अगर 300 करोड़ कमा सकता है तो फिर वो आदमी मतलब एक छोटा सा 50-60 लाख का मर्सिडीज क्यों नहीं ले सकता? वो इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि उसको उसमें वैल्यू नहीं दिखता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स. सो जैसे जैसे कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पे ओनरशिप कम हो जाएगा. जैसे अगर आप यूएस की बात करो तो छोटे छोटे बच्चे मर्सिडीज ओन करते हैं यूएस में, तो क्योंकि यूएस में मर्सिडीज ओन करना काफी सस्ता है कंपेयर टू इंडिया. सेकेंड हैंड मार्केट बन जाएगा, सेकेंड हैंड बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा फॉर लग्जरी कार्स. सो जैसे अच्छे रोड बनेंगे तो आपके यूएस में अगर आप देखोगे 4-4 लाख किलोमीटर तक गाड़ियां चलती है. इंडिया में आप लाख किलोमीटर के ऊपर चला लो तो बहुत बड़ी बात है गिवन द इंफ्रा. बट जैसे शुभम ने बताया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो रहा है तो आपका लाइफ साइकिल ऑफ द कार विल ऑल्सो गो.
राइट तो आपका जब सेकेंड हैंड कार का वैल्यू दिखेगा तो वही कस्टमर आपका फर्स्ट हैंड ओनरशिप भी लेगा, क्योंकि उसको दिखेगा कि 5 लाख किलोमीटर तक लाइफ है, तो मैं इसको कई बार आगे बेच सकता हूँ। सो दैट एक्सटेंट आई थिंक ये इंडस्ट्री में काफी पैसा बन सकता है। राइट। Moving on. लैंडमार्क ऑल्सो डील्स विद सेकेंड हैंड कार्स बाय एनी चांस? ओके, शुरू किया है, दे कॉल इट एज प्री ओन्ड कार्स। Okay, वो लोग अभी और ये क्या है कि जनरली आप मर्सिडीज का जब सेकेंड हैंड भी लेने जाओ तो आप प्रिफर करोगे कि मैं लैंडमार्क के पास जाऊं, क्योंकि वो आपको सर्टिफिकेशन भी अकॉर्डिंगली गाड़ी की फिटनेस का दे देगा। बरोबर। सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। जी जी। हाँ, सो अगर आप एवरेज स्पीड्स की बात करोगे, सो क्या हो रहा है कि इंडिया में बिकॉज अच्छे अच्छे एक्सप्रेस हाईवेज आ रहे हैं, जी। आपका जो एवरेज स्पीड है वो काफी बढ़ता जा रहा है। और जनरली क्या होता है कि अगर आप बेसिकली ये देखोगे कि मुझे 80 से 120 के स्पीड पे गाड़ी चलाने का मौका मिल रहा है तो ही मैं वो गाड़ी लूंगा, वरना मैं अगर 60 लाख का मर्सिडीज लूंगा और मुझे 25 की स्पीड पे ही चलानी है तो उससे अच्छा तो मैं मारुति ले लूं या तो Hyundai ले लूं, क्योंकि अगर मैं मर्सिडीज लूंगा तो मुझे वो फील चाहिए कि राइट। मेरे को मजा आना चाहिए कि यार 100 किलोमीटर की स्पीड पे मैं चला रहा हूँ, तो वो जो फील है। और क्या है कि अगर आप वो स्पीड पे चलाओगे तब आपको समझ में आएगा मर्सिडीज की कीमत क्या है, क्योंकि उसका जो इंजन है वो इतना रिफाइंड है कि आपको वो छोटी स्पीड पे समझ में नहीं आएगा। वो आपको स्पीड अगर बढ़ेगी तो ही उसमें चलाने का मजा आ जाएगा। और जैसे सुशांत जी ने लैम्बोर्गिनी की बात की, अगर आप वो चलाओगे तो उसकी तो मजा और ही अलग है जब आपकी स्पीड्स अच्छी होती जाएगी। और जैसे शुभम ने बताया कि आपके बैरियर फ्री बेसिकली टोल गेट्स हो जाएंगे, सो आपको जो हर 20-25 किलोमीटर पे ब्रेक लगानी होती है फास्टैग के लिए वो भी निकल जाएगा, तो आपका जो पूरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है विल बिकम वेरी वेरी सुपीरियर। और जो चाइना की जो आप बात कर रहे थे कि चाइना के साथ इंडिया को कंपैरिजन करना चाहिए कि नहीं, काफी फेयर आपका वो ऑब्जर्वेशन था। तो चाइना में भी हमने देखा कि जब उन्होंने हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाया प्लस बैरियर फ्री कॉरिडोर्स बनाए तो लग्जरी कार्स रियली टुक ऑफ। सो क्या हो रहा है कि अभी सेम चीज धीरे धीरे इंडिया, भले टाइम लगता है इंडिया में, बट धीरे धीरे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हो रहा है। बड़ा देश है, पॉपुलेशन बड़ा है, तो थोड़ा समय लगता है जी। धीरे धीरे अगर हम देखें सो काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है और उस वजह से हमें लगता है कि परफॉर्मेंस कार्स का यूसेज काफी बढ़ेगा। मतलब अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो कोई 8 से 10 लाख की गाड़ियों में और आपकी गाड़ी चल रही है 80 किलोमीटर और बगल से मर्सिडीज जाती है 120 पे, तो फैमिली को भी ऐसा लगेगा कि यार मैं भी वो ओन करूं, मतलब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। सो ये सब छोटी छोटी चीजें, इंडिया काफी इमोशनल कंट्री है, तो इमोशंस आल्सो ओवर पावर योर फाइनेंशियल्स। सो अगर आप देखोगे तो काफी आपको मतलब अगर आप ऐसे भी देखने जाओ तो मेट्रो में अगर हम देखें कि जैसे मैं बॉम्बे की बात करूं तो लोकल ट्रेन जब चल रही थी और जब मेट्रो आई तो किसी को लगा नहीं कि मेट्रो में लोग जाएंगे, क्योंकि मेट्रो काफी महंगी थी। बट जब कन्वीनियंस देखा कि नहीं ये एयर कंडीशनिंग है यहाँ पे, ये हमको टाइम पे पहुंचाती है, तो काफी लोग लोकल ट्रेन से मेट्रो की तरफ भी मूव होने लगे। भले वो 5 रुपए का 50 रुपया देना पड़ा, बट मुझे वैल्यू दिखा तो मैंने खर्चा किया। सो दैट वेज इंडिया इज अ फार मोर प्रैक्टिकल कंट्री एंड पीपल हैव वेल्थ। लोगों को लगता है इंडिया गरीब देश है, बट ऐसा नहीं है। मतलब इंडिया में भी काफी पैसा है, बट वही है कि मैं तब खर्चा करूंगा जब मुझे उसमें वैल्यू दिखेगा। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। मूविंग ऑन, या सो यही सिंपल एक थीसिस था हमारा लाइन। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है इसमें भार्गव जी कि अपन लोगों ने टॉप ऑफ द थीम 10,000 फीट का थीम कंफर्म हो गया, एक स्टॉक अपने को मिल गया है। अब एक
जैसे आप लोग तो फंड मैनेजर है, तो आप लोग टाइमिंग बहुत अच्छे से करना जानते हैं कि किस प्राइस पे सबसे ज्यादा वैल्यू आपको दिखता है, राइट? Sure, विच इज sure. द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट। एक Sure. आम इंसान जो है वो, उसको लगता है कि ये तो अच्छा है तो ले लो बस, राइट? और लेते रहो लेते रहो लेते रहो। तो इस पे कुछ आप इनपुट देना चाहेंगे कि इफ सपोज एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर मुझे इस स्टॉक में एक्सपोजर लेना है, तो व्हाट इज आइडियल पाथ फॉर मी टू टेक? नहीं, सो सबसे पहले तो क्या हुआ है कि अगर हम इन जनरल माइक्रो स्मॉल कैप की भी बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से ये काफी करेक्शन आया है जी, जी। पूरे पूरे स्पेस में। सो वो करेक्शन काफी हद तक वैलिड भी था क्योंकि उसके 3 साल पहले मार्केट्स काफी चले थे। सो बेसिकली काफी पैसा बना था स्मॉल माइक्रो कैप में, तो एक करेक्शन ड्यू भी था कि कुछ समय तक इसमें सॉर्ट ऑफ करेक्शन होगा। बट पिछले 1.5 साल में लोगों को सिर्फ निफ्टी दिखता है, निफ्टी में इतना करेक्शन नहीं हुआ है। बट अगर हम स्टॉक्स वाइज जाए इन माइक्रो स्मॉल कैप, Yeah. ऑन एन एवरेज 25 से 30% स्टॉक्स गिरे हैं, इंक्लूडिंग लैंडमार्क। सो एक तो ये है कि इन जनरल लोग निफ्टी को देखते हैं बट स्टॉक वाइज नहीं देखते, स्टॉक वाइज काफी करेक्शन आया है। सो जब भी 25-30% करेक्शन आता है और उसके सामने हमें ऐसा नहीं दिखा है कि अर्निंग्स 30-30% गिरे। सो Okay. क्या हुआ है कि वैल्यूएशन मल्टीपल थोड़ा करेक्ट हुआ है। जी। सो एक तो 25-30% इज अ वेरी गुड हेल्दी करेक्शन। तो फ्रॉम अ टाइमिंग पर्सपेक्टिव लैंडमार्क हो ना हो, जनरली हमें लगता है कि ये स्पेस में धीरे धीरे इंटरेस्ट देखना चाहिए। दूसरा कि ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा मेरे बगल वाला भी सोचना चाहिए, क्योंकि पैसा तब बनेगा जब मेरे अलावा और भी लोग लेंगे। सो सोना चांदी में काफी पैसा बन रहा था, अब फाइनली उसमें पैसा टूटने लगा है। और इंडिया में तो आप जानते हो कि लोग बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते, लोग को Right. कहीं ना कहीं एसेट क्लास में पैसा लगाना है। सो प्रेशियस मेटल्स में काफी समय बाद करेक्शन आया है। जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसा लोग धीरे धीरे इक्विटी मार्केट्स में भी डिप्लॉय करना शुरू कर देंगे। Okay. So to that extent, the timing is good. Third, with respect to landmark, जैसा बेसिकली शुभम ने भी समझाया कि सेक्टर में अगले 12-18 महीने तक काफी टेलविंड है in terms of the auto sector. So top down, the sector selection it should ideally work. And with regards to company, अगर हम पिछले 1-1.5 साल की उनकी अर्निंग्स भी देखें तो काफी सबड्यूड था, काफी अर्निंग्स कट आया था, बिकॉज वो लोग ने काफी एक्सपेंशन किया था। सो Okay. जब एक्सपेंशन किया था Okay. तो क्या होता है कि लैंडमार्क में जब भी आप एक्सपेंशन करते हो तो पीएनएल स्टेटमेंट में खर्चा आता है, बैलेंस शीट पे नहीं आता। Okay. क्योंकि लैंडमार्क क्या करता है कि जब एक्सपेंशन करता है तो नया स्टोर खोलता है, जब नया स्टोर खोलता है तो स्टोर का भाड़ा लगता है और वो भाड़ा आपका एज पीएनएल में खर्चा दिखता है, Right. में नहीं आता, तो आपका अर्निंग्स काफी सबड्यूड हो जाता है। बट अभी हमें लगता है कि अगले 1-1.5 साल वो नए स्टोर इतने नहीं खोलेगा, तो जो स्टोर्स उन्होंने खोले उन स्टोर से रेवेन्यू आएगा, और जब वो रेवेन्यू आएगा तो उनका पीएनएल काफी अच्छा देख सकता है। सो उस पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द नेम, क्योंकि इसमें अर्निंग्स भी काफी अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है इन द नेक्स्ट 1 year। सो टाइमिंग के हिसाब से इट्स अ गुड टाइम मे बी टू लुक एट द सेक्टर एज वेल एज द नेम। Okay. Okay. Fair enough. मैं एक बार शशांक जी आपके पास आऊंगा, and maybe we'll just end this in just 1 or 2 questions. Again, conceptual question, because every time I have a conceptual question, I'm coming to you. I think ये process ही बन गया है कि concept के लिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। जो ये question मैंने भार्गव जी से पूछा था, ये बहुत ही valid point है कि जब हम स्टॉक को लेते हैं वो 20-25-30% नीचे गिर जाता है कई बार, बिकॉज जो वैल्यूएशन, एक्सेस वैल्यूएशन जो होती है वो कहीं ना कहीं नॉमिनेट हो जाती है। बट एज एन इन्वेस्टर व्हेन यू सी 25%-30% डाउन, उस समय हिम्मत नहीं होती है एक आम आदमी की कि मैं शेयर को लूं, राइट? क्योंकि लूंगा तो फिर और 20% गिर सकता है, फिर लूंगा फिर गिर सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाली जो जर्नी होती है, जो राकेश जी ने टाइटन के साथ की है, जो रमेश जी ने की, सबने की, क्योंकि सब बड़े हुए बिकॉज उसी के कारण,
इसमें अगर प्ले करना है तो व्हाट शुड बी दी प्रोसेस? कैन बी ऑब्जेक्टिफाई दिस कि ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये स्टॉक पता लग गया, अब इसको इस पैटर्न पे आप लेते रहो, या आप एग्जिट का सोचो कि नहीं सोचो? ये कुछ कुछ क्वेश्चन जो थोड़े ग्रे हैं, अगर इफ यू कैन गिव योर इनपुट एंड मे बी भार्गव जी ऑल्सो वांट्स टू पुट सम इनपुट. Yeah, no, I think Vivek, it's a very important question and a big dilemma. Hmm. And not just, I would say, individual investor, but any fund manager, any professional also. जी जी. Because ultimately, हम सब लोग human beings हैं. हम लोग यही तो है नहीं कि फॉर्मूला पे चलेंगे. I think emotions are part of our life. और उसको आप डिटैच नहीं कर सकते. So to create long term wealth, जैसा आपने एग्जांपल दिया झुनझुनवाला जी का, टाइटन का और many other stocks. आज सुबह मैंने एक आर्टिकल पढ़ा ऑन Amazon, करेक्ट. तो उसमें मैंने पढ़ा कि Amazon is one of the 100x beggars out of, right? And in this 25-30-year-old journey of Amazon, the stock had corrected more than 50%, more than 3 times. वाओ. Right? So हम 25-30% की बात कर रहे हैं, 50% पर. इनफैक्ट आई थिंक .com के बाद Amazon was down almost 95%. या वो तो And मुझे so याद was है. I think Apple Yeah. or even Microsoft that time. So drawdowns are a part of life. Now Amazon probably was a very different sort of bet because वो conceptual bet है. Correct? Probably Microsoft was not that conceptual bet, but even that has created big wealth. Right? जैसे Titan again has created big wealth and probably was not a concept. They keep, I would say, I think their understanding of Indian consumer mindset, right, as to what a customer wants and what is he looking for from a retailer for that side. They're very good at it, and that's why they kept on adding various formats. अभी सबसे ज्यादा उसमें तनिष्क चला उनका, correct? But there are other formats like eyewear भी अच्छा चला उनका. Ultimately चालू तो घड़ी से किया था, correct? But they moved on to many other formats and they keep on experimenting. उन्होंने साड़ी भी चालू किया है. I think what you have to look at is कि opportunity क्या है in long term. From a next 10 and 20 year perspective, because if you look at finding a multi-bagger, right, ये 2 साल 3 साल में लक से ही बनता है या 5 साल में. असली मल्टीबैगर तो 10 साल और 20 साल में बनते हैं, राइट. और उसमें ये ड्रॉडाउन्स आएंगे बोथ बिकॉज ऑफ मार्केट रिएक्शंस टू आई वुड से असेसमेंट. जैसे अभी स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स, अब किसी भी अच्छी कंपनी हो आपकी धुलाई होनी पक्की है बिकॉज लिक्विडिटी इज नॉट इन योर कंट्रोल. सो अगर 100 इन्वेस्टर बेचने आ रहे हैं और खरीदने वाले सिर्फ 5 हैं तो स्टॉक गिरना ही है, राइट. और जिसको खरीदना वो भी वेट कर रहा है कि इसको थोड़ा और गिरने दो, जिनको बेचना वो बेचने दो, मेरे को और सस्ते में मिलेगा तो मैं जल्दी में क्यों खरीदूं. सो ह्यूमन साइकोलॉजी, इसीलिए मार्केट चलता है जिस हिसाब से हिस्ट्री चलती है वैसे मार्केट भी चलता है. सो आपको लंबी अपॉर्चुनिटी देखनी है कि अपॉर्चुनिटी स्टिल अलाइव है या नहीं. यू हैव टू रीअसेस दैट कि नेक्स्ट 10 years 20 years लेट्स से यूजिंग दिस स्टॉक और सेक्टर कि ऑटोमोबाइल्स लंबे समय तक इंडिया चलेगा कि नहीं चलेगा. इंडिया में आई थिंक इफ यू आस्क एनी किड ऑल्सो ही विल एग्री कि 10 साल 15 साल में ऑटोमोबाइल तो चलता रहेगा और बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इंडिया में. देन यू हैव टू लुक एट अगर अच्छा अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो जो बिजनेस को मैं बैक कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट को बिजनेस करना आता है या नहीं आता है, विच इज वेयर यू लुक एट देयर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड कि आरओसी बनाया है नहीं बनाया है, करेक्ट. बिजनेस मॉडल सही है या नहीं है, करेक्ट. क्योंकि सेम अपॉर्चुनिटी को लोग खराब भी कर सकते हैं, राइट. जैसे हमने देखा है कि लेट्स से रिटेलिंग में डीमार्ट कहाँ पर पहुंचा, बिग बाजार कहाँ पे गया, राइट. अपॉर्चुनिटी वाज देयर फॉर एवरीवन, राइट. तो सब अपने अपने तरीके से खेलते. तो आपको देखना है कि अपॉर्चुनिटी को यूज कोई सही जगह कर रहा है नहीं है. और उसके बाद आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नेंस. कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस करना अच्छा आता है, बट आई एम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डर अल्टीमेटली, इवन इफ आई एम अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर. जी, हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं. सो विल द गुड अपॉर्चुनिटी एंड ग्रेट बिजनेस टर्न आउट टू बी अ बिग बेनिफिट टू द इन्वेस्टर और नॉट. तो वहां पे गवर्नेंस काम आती है. इज द मैनेजमेंट एंड द ओनर्स, लार्ज ओनर्स, in alignment with minority shareholders or not, which is where governance matters. So I think a combination of opportunity, business model, and governance is what will make a stock multi-bagger. वाओ, क्या सही आपने फॉर्मूला दे दिया श्रान जी. अमेजिंग अमेजिंग.
मेरा मन था कि मैं और आप लोगों से बात करूं, क्योंकि आज मुझे लग रहा है ये एक मास्टर क्लास ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग चल रहा है विद रियल एग्जांपल। बट अनफॉर्चुनेटली आपको इतना ही मैंने बोला था कि आप समय दीजिए, तो थैंक यू। बट होपफुली एक और कभी कोई सेक्टर को लेके फिर चर्चा होगी और एक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को और डीपली लेके जाएंगे। पता है हम लोग चारों में कॉमन क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हम लोग चारों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हम लोग चारों ही सिखाना चाह रहे हैं लोगों को। दैट इज रियली समथिंग विच आई अप्रिशिएट ऑल थ्री ऑफ यू। शशांक जी, शुभम, भार्गव, आपने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और आए और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। Thank you, Vivek. Superb. थैंक यू सर। Thank you. All the best. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.